Assalamu alaikum students. Today we are going to continue with the same topic, An Essay on Man by Alexander Pope. Today I will do the critical analysis of the poem. The philosophical poem, An Essay on Man, consists of 4 verse epistles, each of which was published separately and anonymously between February 1733 and January 1734 by a bookseller not previously associated with Pope's writings. The first epistle surveys relations between humans and the universe. The second discusses humans as individuals. The third addresses the relationship between the individual and society. And the fourth question, the potential of the individual for happiness. An essay on man describes the order of the universe in terms of hierarchy or chain of being. By virtue of their ability to reason, humans are placed above animals and plants in this hierarchy. It is explained that in this philosophical poem there are 4 letters written. They were written by Alexander Pope, but they were published by one of the booksellers who was not associated with Pope in 2 years. The first epistle or letter is about the relation of human and the universe. The second epistle or the letter is about the human as the individual, the man, what is the man's identity. The third addresses the relationship between the individual and society. This is what you have done in this poem. It talks about that how the man can place himself in the society, in the hierarchy, where he is placed, what to be expected from God, and what we should be doing in this society to have a better place and afterwards. And the fourth question, the potential of the individual for happiness. So these are the 4 areas which Alexander Pope has covered in his 4 epistles or 4 verse or the 4 parts of An Essay on Man. Now, it is by virtue, by intelligence of God that the ability to reason is given to humans, that they can actually reason out things. They are intellectual, they've given the mind to think, and the animals are not, and plants are not given, so they are above them in the hierarchy, in the chain of being. They are a step ahead of them. Now this is what or from where Alexander Pope drives the idea that if the man is placed in this situation or at this place in the chain, then what could the man could expect from God, where he stands in this universe, and how he should be acting in society to gain the better life afterwards. Main concept. Pope utilizes the beginning of section 3 to elaborate on the functions of the chain of being. He claims that each creature's ignorance, including our own, allow for a full and happy life without the possible burden of understanding our fates. The main concept here Alexander Pope has given in the 3rd letter which we have done is that it's a gift of God, the ignorance of the future, and it is given according to the intelligence of the creature. It allows the human being and other creature to live happily in this world without taking the burden of understanding our fates or fortune or the future which is written for us. We are free from that kind of worry. If it is good or bad, we don't know, so we are free from that worry in one way. And what we are doing is that we are spending our life accordingly and hoping to have a better future ahead in our life. So we are free in one sense. Instead of consuming ourselves with what we cannot know, we instead we should place hope in a peaceful life to come. Pope connects the afterlife to the soul and colors it with a new focus on a concept of people who believe that souls have not been distracted by power or greed. The soul desired to be free and return to its eternal abode after death. The second part of the poem talks about the life to come, the life which will be given to us after our death. And according to Alexander Pope,
he picks up the point or the concept of the people where they say that the soul is very original, it is very pure, it doesn't corrupt by the power or greed in this world. So the soul is always unrest, or it is in the state of unrest and desire to be free and to return to its original place, that is the eternal home after death. यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो पोएम लिखी थी फिलोसफिकल पोएम ऐसे ऑन मैन, ये 4 हिस्सों में लिखी गई है, 4 लेटर्स लिखे गए थे अलेक्जेंडर पोप ने, और उन्होंने पब्लिश नहीं किए थे बल्कि किसी एक बुक सेलर ने जो पोप से रिलेटेड नहीं था या उनकी राइटिंग से एसोसिएटेड नहीं था, उसने 1733 और 1734 ईयर में ये पब्लिश किए। फर्स्ट एपिस्टल का जो मकसद है या पहला पार्ट जो है इस पोएम का, वो बताता है कि इंसान और इस कायनात का क्या लिंक है, क्या ताल्लुक़ है। दूसरी हिस्से में या दूसरे लेटर में ये आता है कि ह्यूमन यानी इंसान बज़ाते ख़ुद क्या है, एक इंडिविजुअल उसकी आइडेंटिटी क्या है इस यूनिवर्स में। द थर्ड एड्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। The third part which you have done is talking about the men in this world, यानी कि इंसान का इस दुनिया में क्या किरदार है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारता है, उसको कैसी गुजारनी चाहिए। और उसमें 2 सच्चाइयाँ जैसे कि अलेक्जेंडर पोप ने बताई है, एक तो कि हमें अपने बारे में ख़ुद नहीं मालूम होता कि आगे क्या होगा, तो हमें एक उम्मीद दी गई है, वो इसीलिए ताकि हम इस सोसाइटी में, इस ज़िंदगी में रहते हुए, इस माशरे में रहते हुए अपने लिए जगह बनाएं, उम्मीद करें कि अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और अच्छी तरीके से रहेंगे। तो ये चीज़ हमें दी गई है इस सोसाइटी में रहने के लिए, दैट इज़ होप। और इसके अलावा एक सच्चाई और भी है कि इंसान जब मर जाएगा और इस दुनिया से निकल जाएगा, इस सोसाइटी से निकल जाएगा, तो वो अपने साथ क्या लेकर जाएगा। वो मौत जो है वो आपको वो सब कुछ सिखा देती है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल और उसका ये सोसाइटी यानी कि अर्थ या प्लैनेट या इधर रहने का जो मकसद है वो लिखा गया है। फोर्थ क्वेश्चन या फोर्थ लेटर में ये एक्सप्लोर आइडिया किया गया है कि इंडिविजुअल की यानी कि एक इंसान की खुशी किस चीज़ में रखी गई है। और ज़ाहिर बात है इसका आइडिया हमें थर्ड वाले हिस्से में भी मिल जाता है कि जहाँ पे अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि इंसान खुश रह सकता है अगर वो इस चीज़ को मान ले और समझ ले कि सब चीज़ें जो है अल्लाह के हाथ में हैं और वही सब चीज़ों पे इख्तियार रखता है। तो हम किसी हद तक फ्री हैं और हम किसी हद तक अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से भी गुजार लेते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, इससे हमें खुशी महसूस होती है। तो ये लिंक शायद चौथे वाले पार्ट में यानी चौथे लेटर में और तवील तरीके से और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा। फिर वो ये कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसान की और किसी भी क्रीचर की जो अल्लाह की बनाई हुई है उसकी अपनी अकल समझ के हिसाब से ही उसको प्लेस किया गया है इस चेन में जो अल्लाह ताला ने बनाई है। जो सबसे पहले एंजल्स होते हैं उनको ज़्यादा मालूम है, उसके बाद इंसान आता है, इंसान को एक हद तक मालूम है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है और समझ सकता है, और उसके बाद आते हैं एनिमल्स और प्लांट्स जिनको शायद वो रीजनिंग की समझ बूझ नहीं दी गई जो इंसान को दी गई है। इसलिए इंसान का क्राइटेरिया या कैटेगरी उनसे अब ऊपर आती है और वो उनसे एक लेवल ऊपर हैं, और इसी वजह से क्योंकि हम रीज़न कर सकते हैं चीज़ों को, हम समझ सकते हैं, तभी हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमें इस वजह से भी एक फ्रीडम मिलती है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कि हम फ्री हैं, हम आज़ाद हैं कि जैसे हम सोचें हम वैसे गुजारने की कोशिश करें। लेकिन हमें फिर ये ख्याल आना चाहिए कि इस ज़िंदगी के बाद जो हमें मिलेगा वो वही मिलेगा जो हम यहाँ पे करके जाएंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये है या थीम एक जो बेसिक हमें समझ में आ रही है जो निकलती है वो ये है कि इंसान का इग्नोरेंस यानी कि ना मालूम होना या अंधेरे में रहना अपने मामले में कि उसके साथ क्या होने वाला, एक तरह से इंसान को और क्रीचर्स को यानी दूसरी मखलूक को ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन और आसान तरीका फ़राहम कर देता है। क्योंकि हमें इस चीज़ का वज़न नहीं उठाना या हमें इस चीज़ की बर्डन को महसूस नहीं करना कि हमारे साथ आगे क्या हो रहा है या होगा, तो हम हल्के फुल्के तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं और एक बेरेबल स्टांस होता है इस ज़िंदगी को गुजारने का, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमें बहुत कुछ मालूम होगा
तो हम अपनी ज़िंदगी को वैसे नहीं गुजारेंगे जैसे कि हम आज गुजार रहे हैं, एक हल्के फुल्के अंदाज से, एक पुरुमीद अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमें हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा, और हम उसके लिए फिर मेहनत भी करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर हमें शायद मालूम हो जाए कि हमारे लिए क्या लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी एक बुक तैयार है अल्लाह ताला के पास, तो शायद हम इस वज़न और इस बर्डन को लेके ज़िंदगी अच्छी ना गुजार सकें। फिर वो ये कहते हैं कि इस सोच में रह के अपने आप को कंज्यूम कर लेना कि हमारे साथ क्या आगे होने वाला है, हम इस चीज़ से आज़ाद हैं, तो उसकी जगह क्या हमारे पास है, एक अच्छी ज़िंदगी आगे गुजारने की उम्मीद, और वो उस उम्मीद पे हम लोग जी रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं, पोप एक सेकंड आइडिया, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि जो हमारी रूह होती है वो बजाते ख़ुद बहुत साफ़ सुथरी और प्योर है और मासूम है, वो करप्ट नहीं होती इस दुनिया के लालच में या इधर पैसे में या पावर में। चाहे इंसान करता हो ये काम, लेकिन उसकी अपनी ख़ुद की रूह जो भेजी गई है जन्नत से, वो ख़ुद कभी भी स्पॉइल नहीं होती, ख़राब नहीं होती, और उसकी हमेशा से एक डिज़ायर होती है कि वो वापस वहाँ पे चला जाए या चली जाए जहाँ पे से वो आई है, और वहाँ की ज़िंदगी हमेशा की है जो मौत के बाद मिलने वाली है। लेकिन इस सोल को भेजने का अमल भी एक इंसान के इख्तियार में ही होता है कि अगर वो अच्छे अमाल करेगा इस दुनिया में, तो ही उसकी रूह को एक सुकून मिलेगा और वो अच्छी जगह पे पहुँच जाएगी। लेकिन अगर इंसान ऐसा नहीं करता है तो वो ज़ाहिरी बात है बुरी जगह पहुँचेगी। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि इंसान की रूह जो है वो अच्छी ही जगह जाएगी, क्योंकि वो ख़ुद एक बहुत प्योर है, एक साफ़ सुथरी चीज़ है जो इंसान के अंदर कैद है, और जब वो निकलेगी तो वो अपनी बेहतरीन जगह ही जाएगी जहाँ से वो आई है। तो अलेक्जेंडर पोप ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव व्यू को लेकर ये एक पोएम एक्सप्लेन की है। स्टाइल एंड फॉर्म। The poem is written in heroic couplets. The mastery of this style is seen in this poem. There can be a more technical explanation of how a heroic couplet should be used and its intended effect. But in the case of Pope's work, its main attribute is the capability to deliver a message that is pleasant to the ear, but at the same time helps the reader retain the essence of the message. Now, it is said that heroic couplets are a very interesting form of poetry. ये एक स्टाइल है राइटिंग का, पोइट्री का जो ये स्टाइल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसमें बहुत वेरिएशंस हैं, बहुत टेक्निक्स हैं। लेकिन जैसे पोप ने इसको इस्तेमाल किया है अपनी पोएम में, तो उसमें हमें दो चीज़ें साथ मिलती हैं। एक तो उसको पढ़ के हमें एक प्लेजेंट मैसेज मिलता है, एक अच्छा मैसेज मिलता है, और क्योंकि राइमिंग चाहिए होती है और एक फॉर्मेट होता है इसको लिखने का, उसमें ये मैसेज का एसेंस बरकरार रहता है। तो ये पोप की मास्टरी है कि वो हीरोइक कपलेट्स बेहतरीन तरीके से लिखते थे, और उन्होंने इस पोएम में इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। Every couplet is an idea that can stand alone. Each couplet is like a cell that can sustain itself. It was designed to impart certain knowledge and at the same time a particular assertion regarding man, God, or the world. So here it is telling you that every couplet, every two line is a idea, complete idea in itself, and each couplet will be telling you the particular messages regarding man, God, or this world. वो यहाँ पे कहते हैं कि हर टू लाइन या कपलेट्स जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं पोएम में, ये हर एक कपलेट जो है एक अलग मैसेज है कंप्लीट, और वो मैसेजेस तीन चीज़ों के ऊपर हैं, या तो इंसान के ऊपर है कि वो कैसा है, क्या है, और उसके बारे में, या खुदा के बारे में वो है, या वो इस दुनिया के बारे में। तो अलेक्जेंडर पोप ने अपने जो मैसेजेस हैं जिसमें वैरायटी है, यानी उसने इंसान का ताल्लुक़ इस दुनिया से, और इस दुनिया और इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से, इन सब आइडियाज़ को अपने टू कपलेट्स के अंदर कम्प्लीटली बेहतरीन तरीके से अलग अलग दिया है। और ये हमें समझ में आता है कि ये अलेक्जेंडर पोप का जो हम कहते हैं कि ये मास्टरी है, वो इसीलिए है क्योंकि हर टू लाइंस को आप अलग तरीके से पढ़ें
यानी पोएम से हटा के पढ़ें तो उसमें एक आपको एक अलग ही समझ में आएगा, एक अलग ही मैसेज नज़र आएगा, जो 3 टॉपिक्स पे है, जो इस पूरी एपिस्टल्स का सीरीज़ का मेन टॉपिक है, दैट इज़ मैन, गॉड एंड द वर्ल्ड. Conclusion. The author's use of poetry and heroic couplets provided him the means to deliver a significant amount of information while at the same time demonstrate the efficient use of limited space. However, these rhyming words are only part of the profound power and beauty of his work. It is the clever use of word associations that enabled him to make his work as powerful writer. So here they have concluded the style and the form of the poem, and they have told you that in this poetry the heroic couplets has provided very meaningful messages. The way the Alexander Pope has used it, they have given out very meaningful messages, and the rhyming of the words itself has the profound power and the magic of its own. The beauty of the work lies in these rhyming, so simply done, and yet the message is so profound at the same time. So both of it, the things of the rhyming couplets or heroic couplets, gives the strength to the writer and in his writing. So Alexander Pope is considered the powerful writer for the same reason, because he was the master of using heroic couplets in his poems. Now this is for today. Thank you.